Welcome to a focus interview program by Aspire IAS. We are continuing our series on economic survey, and today we will be dealing with chapter number 3, 4 and 5. Let's begin. Important instructions we should always keep in mind. Have a pen and a paper. Without having your notes in place, you're not going to derive as much benefit from this lecture as you would with them. Revise the related important concepts simultaneously. Listen to our answers only after answering your own self. Then do not belong to any ideological grouping and have a positive attitude and a broad smile. Smiling is very important. The interview people are checking your personality. They're checking how much you are confident even in case of adverse circumstances. So smile always, practice smiling. Even if you're not happy, just smile. That is an exercise that you must do before your interview. Starting the 3 chapters that we are going to discuss today: external sector, monetary management, fiscal intermediation, and prices and inflation. Mind you, these chapters are full of data. Maybe in the slides that will be coming up, you will find that there is a lot of data and you will somehow get scared. But we assure you that we are not going to tell you about the data only. We are going to tell you the trend. And the trend is very important because it helps you derive analysis and draw your own opinion on the issues. So you do not mug up the data, do not try to mug up the data. We will tell you what is important and what is not important and how you should remember the data. So do not get scared. Starting with external sector first. India is an import-dependent economy as well as it is a globalized economy. After 1991, we adopted the model of open market economy, partial open market economy, and right now we are having a lot of import and export with the outside world. That is why the external sector is important to understand because it helps in our economic growth. The first thing is the current account deficit. Second is the capital account. And both of them together make up the balance of payments for India. This balance of payment is nothing but your forex reserve. Forex reserves help you meet your expenses, that is the current account deficit, and they help you generate your own assets, that is what your ownership is. So forex reserves currently in India are at around $460 billion. This amount is sufficient to meet 11 months of import bill. To give you a perspective behind this number, I can tell you that in 1991, when we were facing one of the worst crises of our economy, we were having forex reserve only that was sufficient to cover your imports only up to 1 week. So you see that how much we are comfortable right now. So we are not in a situation that was existing during the time of 1991 thanks to our capital account surplus. Now we can discuss that what is current account first. Current account is comprising of your less than 1 year of dollar bills. This includes whatever you are exporting and whatever you are importing. Whatever you are exporting, you get money on that, forex reserve on that, and whatever you are importing, you have to pay dollars to the outside countries. So here we can break down the current account into its components. First component is your trade balance. This is the first component. And what is trade balance? Trade balance is how much are your imports more than the exports. The negative figure here shows that it is trade deficit. We are in a trade deficit situation. That is, our imports are more than the exports. And this is only in relation to the goods. This is not including the services. This is only for the visible items. If you can see that the trend has been that the trade balance earlier during 2014 to 2016, it was reducing. After 2017-18, it started to increase. And right now in 2019-20, again it is reducing. So that has been majorly the trend. Second, we can talk about the services. Services are an important part of our overall current account deficit because
the services are helping offset the trade deficit. That is why services are seen in the surplus. We have a surplus of around $40,474 million during the half year of April to September. So this shows that we are in a condition to offset our trade deficit. Now services surplus, if you can see the trend, it has been declining after 2014-15, 15-16. So this shows that the services surplus is becoming less and less, and that is resulting in increasing in our current account deficit. Third item is the income. This is including the interest payment, the dividends that we get from outside or we pay to the outside world, etc. Then the third thing is the transfers. This includes the remittances. You know what remittances is? Remittances is the amount that as an NRI transfers to India or an Indian transfers to abroad to his family. So the net transfers are also in the positive territory, which is helping offset our trade deficit. Overall, if we see, the current account balance is in current account deficit right now, which means that we have to make payments to the outside world more than we receive from them. So this means that during 2014-15 to 16-17, this amount was reducing. Our current account deficit was reducing. But from 2016-17 to 17-18, it immediately jumped to 48,000. Then it somehow was increasing only. Right now in 19-20, it is again decreasing. So it has been a wavy trend, if you can remember it that way. Now moving on, within the current account, we can first talk about the first component, that is our merchandise exports. What is merchandise? Merchandise is nothing but goods. So just to give the perspective to you about the numbers, we can talk about that merchandise exports as a percentage of GDP. Now if you see that 2009 to 14, that is the UPA 2 era, our exports were 15.7% as a percentage of GDP. Then during the first term of the NDA government, it declined to 12.7%. Now here you do not have to be political. I was just mentioning these periods just to give you a link between the polity as well as the economy, but there is no direct link. The factors are very different for the economy or the exports to slow down. For example, trade war happened during 2014 to 19. For example, the protectionism policy started by USA, America First policy, was started during 2014 to 19. So there are multiple other factors which are affecting the exports. We cannot blame it to the political party alone. Then 2018-19, the 12.1% is the merchandise exports to GDP and 11.3% during 2019-20. Now, what is the export basket of India looking like? The first and the foremost thing that that makes up our export basket is petroleum products. India imports crude oil. That is one of our major imports. But we have a very good refining industry. For example, Ambani, Reliance, for example, Adani, all of these are indulged into refining of the petroleum. Even ONGC, HPCL, all of these are refineries. So they are helping refine the products, and then these products, whatever we get, like petrol, diesel, natural gas, or even your fertilizers, plastics, we are exporting to the other countries. So this is a major export product for us. Second is our pearls, precious and semi-precious stones. Third is drugs, formulations and biologicals. Now, I would like to stop here and tell you that 2011-12 to 2019-20, this is a major increase in our pharmaceutical exports. Our pharma industry has done very well during this tenure. So it clearly highlights that our pharma exports have a great potential to increase our exports in the future also. Now coming to the next part, that is gold. Gold is always an export commodity for India. Then iron and steel is also there. Another thing that I would like to highlight is the electrical machinery. India
during 2011-12 was not having enough of electrical machinery exports, but during 2019-20, over the period of 10 years, it has made its industry so strong that we are able to export good amount of electrical machinery also. So why we study these numbers? We study these numbers in order to analyze that what is the new sunrise sectors for Indian exports, so that we can give those sectors more thrust. If you see the new policies, National Electronic Policy, if you see in terms of the government initiatives to set up petrochemical and petroleum investment regions, for example in Dahej, so these are giving us opportunities to look at how the government policies are working. Are we going in the right direction? Are we targeting the right sectors? So that is why we study these numbers. We don't mug up the numbers. We study them in order to understand whether we are going in the right direction. Then this is the export basket. Now we can also talk about that what is the share of India in the world exports. If you see that the share of India from 2011 to 2018-19, it has almost been same, 1.64% of the total world exports. So our share of world exports has been stagnant. Then another thing that you should look at is the percentage of the manufactured items and their share in the exports. If you see before 2015, it was only at around 66%. But immediately from 2014 to 15, it increased to 75%, which is a great jump. Why did this happen? The economic survey suggests that it was the success of Make in India program. We analyze that after 2014 to 2015, we analyze that there were multiple other things, like in case of defense, we started new defense procurement policy in terms of strategic partnerships, strategic procurement policy. So these were some of the areas where we excelled. Even our electronic items, they got a great boost during this time. That is why our exports of manufactured items jumped. Now coming to who are the top 5 export destinations of India. If we see, first is the USA, second UAE, China, and then Hong Kong, Singapore. Now USA is constituting about 17% and its share is increasing from 2011-12 to 2019-20. Its share has increased in the export basket. What are we exporting to them? This information is important for you in order to answer the IFS or foreign services related questions. Sometimes they may ask that if India and US, what kind of products are they dealing in? What kind of trade are they looking at? So at that time, you must have this information. Even as a civil servant, you must have this information because it helps you generate your own industrial base. So this is important to know. I can tell you the common commodities. India has always been a good exporter of petroleum products. As we read earlier also, precious stones and then jewelry, gems and jewelry. Even for the electronic items, mobiles is an important part. So these are broadly the ones. And you would see that they are common in all these aspects. Chemicals we are also exporting. So these are common in all the 5. You can look here, you can see for yourself that where is our export basket lying and whether we are in a condition to target. If you see here, we can see that we are mostly concentrated on the developing countries. We are not going towards the high income countries. So this is a negative for Indian export policy. We should target countries who are in a condition to pay us more. Rather, we are right now targeting like UAE. UAE is in the West Asia. We are targeting China, then Singapore. These are all developing countries. They are not going to pay a lot to us. Second, we come down to merchandise imports. Merchandise imports, just to give you a perspective, is 2009 to 14 we were having 24.3%, but it declined to 18.7%, that is 19% during 2014 to 19, which means that our goods import as a percentage of GDP declined, which is a very good thing because you would say that we are not importing more and that is why we are controlling our current account deficit. Yes, indeed that happened. We were able to control our current account deficit. Right now we are having it at around 18%. Now what is it that we are importing a lot? First, of course, is the crude oil. Second is the gold. We are a gold loving country
every festival, every marriage, every function, we are always keen on procuring gold. Our families are not ready to sell the gold because they think that it is inauspicious to sell the gold. So gold is one of the favorite commodities of India. But mind you, gold is one of the least liquid assets, and it is not generating as much wealth as other assets can generate. But still, India is investing in it because it is a traditional belief that gold is a safe investment. So it is a part of the behavior of the people, and how people's behavior is impacting the savings in the economy. Then we come down to the third part, that is the petroleum products. Thereafter, coal, coke, and briquettes. We are importing anthracitic coal from countries like Indonesia and Australia because India is good in bituminous coal, but we are not having good reserves of anthracitic coal. That is why we are getting it from outside countries. Then pearls, precious and semi-precious stones is another item. I would like to again highlight one more thing about the electronic components. From 2011-12 to 2019-20, the electronic components percentage in the imports has increased a lot. You would say that it is a bad thing, why are we importing the electronic items? No. Even in the first volume we discussed that India, if it is able to bring components from outside and it is able to generate finished products in India, it can help our increase our exports to the other countries. So electronic imports increasing, component import increase is a very good thing for India. And even after signing the information technology agreement with WTO, we were in a condition to import the electronic components at zero duty rate. So this has helped boost our IT industry, IT enabled services industry, etc. Then we come to who are the top 5 import sources of India. First is of course China. China is one of the biggest exporters to India. Second is USA. USA is importing good amount of goods to India. Then we club the UAE, Saudi Arabia and West Asia into and Iraq into West Asia. So West Asia is on the third number. Then we have Switzerland, which is also importing good amount of things. Then Hong Kong. Hong Kong is a new partner, trade partner, which is starting to import a lot to India. Apart from this, Korea is also there and Singapore is also there. Now, what are we importing from these countries? Mostly we are importing, you would see, electronic items and machinery. Second is the crude oil. Third will be semi-precious stones and precious stones. And fourth will be your chemicals, pharmaceuticals and all the luxury goods, which we are not in a condition to make it ourselves in India. You can read the whole slide, pause it, read it comfortably, understand that how the things are going. This is helpful for you to answer your questions in the interview. Also, sometimes in the PT and the mains, now the UPSC is asking that what is it that we are exporting a lot, what is it that we are importing a lot. So you must be very good with these facts. These are all facts, you cannot make a guess in them. Then merchandise trade deficit. Merchandise trade deficit is your goods import over the goods export. It has decreased. If you see the trend, it has decreased, and right now it is at 6.3%. Now, what are the reasons for the trade deficit decline? First is your decline in the oil prices. If the oil is cheaper, we are in a condition to import the crude oil at a cheaper price. Second is economic slowdown. Because there is an economic slowdown, our industries are not producing a lot. If they are not producing a lot, they will not import a lot. That is why there is a slowdown. Third is your reduced trade in auto. India is a very good manufacturer or the assembler of the auto. If the world is not buying the auto, we are not buying the auto components from the other countries. That is also another reason for decline in trade deficit. Then depreciating currency. If the currency is depreciating, then we are restricting our imports because imports become expensive. That is why that is another reason for decline in trade deficit. Now, if we analyze that, who are the trade surplus countries vis-a-vis India? So USA and UAE. First is USA, second is UAE. These are the two major countries with whom we are having a trade surplus, and rest all are the trade deficit countries. If you analyze here, you would see that over the years the trade surplus is declining with USA as well as with UAE. And in the recent times, if we analyze the trend with respect to Hong Kong and Singapore, we can see that
till last year they were having a trade surplus vis-a-vis India, but now they are into trade deficit. So this shows that India is consistently losing its competitive advantage in these economies. Even though there is no black and white answer that whether trade deficit is good or bad, but yes, there is a need that we can manage our trade deficit within the trade deficit only. We should not look up to the capital account surpluses in order to compensate for our current account deficit. So that is one thing, that is one trend that you must bear in mind, and you must answer confidently in front of the interview board that Indian trade policy is right now not working fine because our trade surplus is consistently losing and our trade deficit is consistently increasing. Is example with China. From 48 to now 53, it has increased. Now, who are the top 10 trading partners of India? First is USA, second is China, third is the West Asia Weekend Club, UAE and Saudi Arabia into West Asia, then Hong Kong, and we can see Singapore, a part of Southeast Asia, and Germany, which is part of Europe. So that is normally the trend. Even you can see here that we are focused not on the high income but on the low income countries. This is very, very bad. India should not do this. China always focus on the high income countries. They focus on Europe, they focus on North America because they could pay a lot. That is why India should also target these markets, make products that are saleable in these countries. Only then we are in a condition to increase our exports. We can talk about the service exports and imports. India is a labor surplus country, but our labor is very skilled labor. We are having good amount of knowledge, we are having good amount of IT skills, and we are having a very good demographic dividend. So our service industry can really conquer the world if we start to have good service trade relations with other countries. But in the recent times, we are having a negative trend in the service surplus. Our service imports are increasing, whereas our service exports are declining. This is a negative trend. As per WTO report, the service trade is right now having the restrictions that were present even during 1950s at the time of end of the World War II. So this shows that service trade has a lot of scope of becoming liberalized, becoming more open, and it has a lot of potential to increase the service exports. India has been very good. Since 1991, we have been very good in the software services. Second, our main competitive advantage is in business services. Business services include your auditing service, accounting service, knowledge advisory, technical advisory, engineering advisory. All these kind of advisory services are a part of business service. And the third thing is the travel. The travel here is nothing but your tourism. Outside people, foreign people are coming to India in order to travel in our country. They come here for recreation, spiritualism, they come here for medical tourism, business tourism, eco-tourism. India is rich with tourism potential. Wherever we go, we can find adventure, we can find tourism potential, but it is just that we still do not have the right infrastructure, we do not have the right financing mechanism, we do not have the right policies, we do not have the right digital infrastructure in order to boost our tourism sector. If we can take care of all of these things, we are in a condition to increase our GDP by at least 1 or 2 percentage points. Second, we can talk about the service imports. Service imports, if you see, have increased. What is the reason? Because India has seen more of FDI in the recent times. When FDI comes in, the MNCs are somehow getting more services from their home country. They get foreign advisors, they get foreign accountants, they get foreign management services. So that increases our service imports. Now we can talk about the net remittances. Friends, if you realize that Indians are present everywhere, you must have heard कि जहाँ भी जाओ हिंदुस्तानी तो आपको मिलेगा ही मिलेगा. हिंदुस्तान का आदमी आपको वर्ल्ड के हर कोने के अंदर मिल सकता है. That is true. Even the migration report of UN is saying that there are about 1.75 crore people who are out there in the world. NRIs who are still in the world. मतलब कहीं ना कहीं किसी ना किसी देश के अंदर 1.75 करोड़ लोग हैं. यानी कि आपको देश के किसी भी कोने में एक हिंदुस्तानी तो जरूर मिलेगा. And 1 in 6 people are Indians.
तो हाई चांसेस है। अब इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये है दैट वी आर एबल टू जनरेट रेमिटेंसेस। रेमिटेंसेस क्या होती है कि वहां के लोग एनआरआईज हमें हमारे देश के अंदर उनकी फैमिलीज को पैसा भेजते हैं। तो ये रेमिटेंसेस कैसे हमें फायदा करती है? वर्ल्ड बैंक सेज दैट वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट रेसिपिएंट्स ऑफ रेमिटेंसेस। अगर आप केरला का एग्जांपल ले तो केरला की जो इकोनॉमी है उसका 20% जीडीपी रेमिटेंसेस पे चलता है। आज जो भी लोग गल्फ में जाते हैं काम करने के लिए, कोई भी अपना एंटरप्राइज चलाने के लिए, वो केरला के अंदर अपना रेमिटेंसेस भेजते हैं एंड ये रेमिटेंसेस 20% जीडीपी को पूरा करता है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये दिखाता है कि कैसे रेमिटेंसेस हमारे देश के लिए जरूरी हैं। अब इंडियन डायस्पोरा कहां कहां पर है? सबसे ज्यादा इंडियन डायस्पोरा आपको वेस्ट एशिया में मिलता है, कतर, ओमान एंड यूएई में। सेकंड है साउथ ईस्ट एशिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस। फिर यूरोप के अंदर, यूके में, लंदन में, वहां पे बहुत सारे आपको फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स मिलेंगे। देन नॉर्थ अमेरिका में, यूएसए में, कनाडा में जैसा कि आप जानते हैं कि लोग कहते हैं कि सरदार और पंजाबीज आपको खूब मिलेंगे कनाडा में। फिर अफ्रीका में मॉरिशस, सेचल्स, नाइजीरिया एंड घाना। इस साइड में आपको बहुत सारा इंडियन डायस्पोरा मिलेगा एंड इनके यहाँ पर होने से ना केवल हमें स्ट्रेटेजिक एंड पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक कैपिटल मिलता है, एज वेल एज हमें फॉरेन कैपिटल मिलता है हमारी इकोनॉमी को चलाने के लिए। सो रेमिटेंसेस आर ऑलवेज गुड एंड दिस इज इंक्रीजिंग। आप देख सकते हैं कि हमारे रेमिटेंसेस कंसिस्टेंटली बढ़ रहे हैं, यानी कि एनआरआईज का कॉन्फिडेंस इंडियन इकोनॉमी के अंदर बढ़ रहा है। दिस इज अ वेरी पॉजिटिव थिंग एंड दिस शुड बी कंटिन्यूड फर्दर। अब इकोनॉमिक सर्वे ने हाईलाइट किया कि नेट रेमिटेंसेस आर मूविंग इन लाइन विद द ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस। अगर ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे तो नेट रेमिटेंसेस बढ़ेंगी, अगर वो घटते हैं तो नेट रेमिटेंसेस नीचे जाएंगी। फिर हम बात करते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट के बारे में। यहाँ पे अभी तक हमने जो बात करी वो करंट अकाउंट डेफिसिट के कंपोनेंट से। अब हम करंट अकाउंट डेफिसिट को एज एन ओवरऑल फिगर देखते हैं। यहाँ पे आपके लिए सिर्फ एक चीज जरूरी है समझना कि इसका ट्रेंड क्या है। 2013 में ये बहुत हाई था 4.8%, लेकिन अचानक से हमने इसे कंट्रोल किया 2013-14 में। 2013-14 we were able to control it and since then it has been at a low level 1.7 1.5 इस तरीके से चल रहा है। इसका अब ट्रेंड थोड़ा सा स्टैग्नेंट हो चुका है। An increase in the current account deficit as a ratio of GDP versus the BOP, ऐसा तो हम जानते ही हैं। तो इससे क्या होगा कि हमारा एक्सटर्नल डेट बर्डन बढ़ सकता है अगर हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत ज्यादा हुआ। हम बहुत सारा पैसा हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट को, हमारे खर्चों को भरने में लगा देंगे। अब दोस्तों बात आती है, इंडियन इकोनॉमिक सर्वे ने हमें एक बहुत ही अच्छा चैप्टर दिया इन टर्म्स ऑफ इंडिया, डब्ल्यूटीओ एंड उसके क्या इश्यूज हैं। सबसे पहले हम इंडिया डब्ल्यूटीओ के बारे में बात करते हैं। तो इसके अंदर अगर आप देख सकते हैं हमारे मेजर इश्यूज चल रहे हैं। हमारा सबसे पहला इशू चल रहा है विद रिस्पेक्ट टू परमानेंट सेटलमेंट ऑफ पीडीएस। हमारा जो एमएसपी का इशू था, उन्होंने बोला था कि एम्बर बॉक्स सब्सिडी में आता है, दिस शुड नॉट बी कंटिन्यूड एंड दिस शुड बी रिफॉर्म, जिसके कारण हमने शांता कुमार कमेटी रिकमेंडेशंस को भी लेकर आए थे, हाई लेवल कमेटी बनाई थी एफसीआई के रिफॉर्म्स के लिए। तो ये सारी चीजें अभी तक चल रही है, इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं आया है। अभी तक हम सिर्फ पीस क्लॉज के ऊपर बात कर रहे हैं। देन सेकंड इज फिशरी सब्सिडीज एंड थर्ड इज ई कॉमर्स रिलेटेड इश्यूज। आज अभी तक पूरे वर्ल्ड के अंदर देयर इज स्टिल नो मैकेनिज्म टू रेगुलेट द ई कॉमर्स सेक्टर। आज अगर हम बात करते हैं अमेजॉन की, एप्पल की, इनके ऊपर आज तक कोई रेगुलेशन नहीं है ग्लोबल लेवल पे, जबकि इनके ऑपरेशंस पूरे ग्लोबल लेवल पे स्प्रेड है, लेकिन आज तक कोई भी एक मल्टीलैटरल ऑर्डर नहीं बना है इनको कंट्रोल करने के लिए। तो ये एक मेजर इशू चल रहा है डब्ल्यूटीओ में एंड दिस इज आल्सो एन इशू बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। Then a new issue has arrived in with respect to the resolving appellate body crisis. USA ने recently stopped the appointment of judges in the appellate body. So this is resulting in dysfunctionality of the dispute settlement mechanism. This is another big issue because it leads to a non-rules based order. Then special and differential treatment to the developing countries. ये वही जो हमारा दोहा डायलॉग के टाइम पे डिस्प्यूट चल रहा था विद रिस्पेक्ट टू स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म एंड नॉन एग्रीकल्चर मार्केट एक्सेस, ये वही चीज है। देन एक्सपोर्ट सब्सिडी का इशू जो लास्ट ईयर अराइज हुआ था एंड इसके रिस्पेक्ट में इंडिया ने एक्शन भी लिया है विद बाय डूइंग अवे विद द MEIS एंड द SEIS स्कीम्स। फिर इसके बाद हम आते हैं प्रिजर्विंग द कोर प्रिंसिपल्स ऑफ मल्टीलैटरल ट्रेडिंग सिस्टम एंड नॉट इंडल्जिंग इन द ट्रेड वॉर्स। इंडिया हमेशा से कहता है कि ट्रेड वॉर किसी भी नेशन के लिए, एक मल्टीलैटरल ट्रेड ऑर्डर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हमें WTO के थ्रू ही अपने डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करना चाहिए। तो इंडिया हमेशा स्टैंड्स फॉर मल्टीलैटरल ट्रेडिंग सिस्टम। देन सेकंड वी कैन टॉक अबाउट द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ऑफ इंडिया।
So there is a lot of research that has to be done behind this. हम सारी चीजें इसके अंदर नहीं डाल सकते, इसके लिए हमने सिर्फ आपको की पॉइंट्स लिख कर दिए हैं जिनके बारे में आप फर्दर पढ़ सकते हैं हमारी स्लाइड्स के थ्रू। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए क्या कर रहे हैं। तो एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए हम MEIS मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम एंड सर्विस एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम के स्कीम्स के थ्रू काम कर रहे हैं। इसको हमने रिसेंटली रिफॉर्म किया है थ्रू रिमिशन ऑन ड्यूटीज एंड टैक्सेस फॉर द एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स की नाम से। सेकेंड इज योर एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स। ब्रॉडली अगर आपको बताऊं तो कुछ भी बनाने के लिए हमें कैपिटल गुड्स की जरूरत पड़ती है, मशीन, प्लांट एंड फैक्ट्रीज, इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है। तो इन चीजों को अगर हम जीरो ड्यूटी पर इंपोर्ट कर लें तो इससे हमारा कॉस्ट जो है वो कम हो सकता है इन चीजों को प्रोड्यूस करने का। सो यही चीज गवर्नमेंट ने करी, दे हैव अलाउड जीरो ड्यूटी इंपोर्ट्स ऑफ कैपिटल गुड्स इन ऑर्डर टू बूस्ट द एक्सपोर्ट्स इन आवर इकोनॉमी। थर्ड इज द एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम, विच मीन्स कि अगर आपको कोई भी रॉ मटेरियल, स्टोर्स, कंज्यूमेबल आइटम्स अगर आपको प्रोक्योर करना है तो आप उन्हें जीरो ड्यूटी पर प्रोक्योर कर सकते हैं। देन इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम, ये इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम जैसा होता है कि इसके अंदर आपको 3% से लेके 5% की इंटरेस्ट पे छूट मिल जाती है। देन डेडिकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स, देन special economic zones, electronic hardware technology parks, software technology parks, biotech parks एंड मेडिकल डिवाइसेस पार्क जो अभी रिसेंटली आंध्र प्रदेश में बनने वाला है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हमारे इंडिया के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज्यादा जरूरत है इन ऑर्डर टू गेट प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी एज वेल एज कॉस्ट कंपेटिटिवनेस। इसके लिए हम कोशिश करते हैं कि हमारे एक्सपोर्टर्स को बेस्ट से बेस्ट वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर मिले ताकि वो अपना एक्सपोर्ट बढ़ा सके। देन वी आर कमिंग आउट विद ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सपोर्ट स्कीम। पहले हमारी इंडिया के अंदर स्कीम काम करती थी असाइड, उसी को हमने चेंज करके कर दिया टाइज। इसके अंदर हम ग्रांट्स एंड एड देते हैं स्टेट्स को ताकि वो एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जनरेट कर सके। देन ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग असिस्टेंस फॉर स्पेशलाइज्ड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट स्कीम, ये अभी रिसेंटली 2019 में ही आई है, इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं डिटेल में। देन ट्रेड फैसिलिटेशन मेजर्स, हमने 2017 में नेशनल ट्रेड फैसिलिटेशन एक्शन प्लान शुरू किया था ताकि हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड कस्टम्स प्रोसीजर्स के अकॉर्डिंग हमारे भी कस्टम्स प्रोसीजर्स को वर्ल्ड क्लास बना सके। तो इसके लिए हमने बहुत सारी चीजें करी, जैसे कि हम स्विफ्ट सिस्टम के थ्रू काम करते हैं जो कि कस्टम्स का एक नेटवर्क है, पोर्टल है। देन RFID टैगिंग, जैसे हमारे फास्ट टैग है वैसे ही कस्टम्स के अंदर भी RFID यूज होता है। देन आइस डैश एक पोर्टल है जहां पे आप अपनी रिटर्न्स फाइल कर सकते हैं। ई संचित पोर्टल है, हमने मैंडेटरी रिटर्न्स जो आपको भरनी होती है उसको भी कम कर दिया है। वी रिड्यूस द नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स दैट यू हैव टू फाइल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कस्टम्स प्रोसीजर्स। देन तुरंत कस्टम्स ऐप एंड पोर्ट कम्युनिटी सिस्टम, तो हमने ये भी एक लॉन्च किया है। देन हमने एक नया डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज बनाया है। पहले ये होता था डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एंटी ड्यूटी, एंटी डंपिंग, लेकिन अभी बन चुका है DGTR। तो यहाँ पे एंटी डंपिंग से रिलेटेड मेजर्स लिए जाते हैं, सेफगार्ड मेजर्स लिए जाते हैं, काउंटर वेरिएंट ड्यूटीज लगाई जाती है। तो ये सारी चीजें हैं। एक जो नई चीज इकोनॉमिक सर्वे ने बोला कि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को ठीक किया जाए। व्हाट इज इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर? फॉर एग्जांपल, यू हैव टू मेक वन मोबाइल। नाउ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर सेज दैट if you are importing anything, any component of the mobile, अगर आप स्क्रीन मंगाते हैं, कीपैड मंगवाते हैं या कोई चिप मंगवाते हैं, तो ये सारी चीजें तो ड्यूटी पे लगेंगी, 100% ड्यूटी लगेगी इस पे। बट इफ यू आर इंपोर्टिंग अ रेडीमेड मोबाइल फ्रॉम आउटसाइड, देन यू आर चार्ज्ड वेरी लेस ड्यूटी, 10%, 20%. So you can see that we are charging 100% duty on the components, but on a finished product of mobile, we are charging only 10%, 20% duty. I'm only taking an example. So this is inverted duty structure. और इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का ऑपोजिट क्या होता है कि आप जो चिप्स मंगवा रहे हैं, कोई सेमीकंडक्टर वेफर मंगवा रहे हैं, बैटरी मंगवा रहे हैं, तो इन सब के ऊपर आप कम चार्ज करोगे ड्यूटी, 10%, 20%। लेकिन अगर आप एक फुल फ्लेजेड रेडीमेड मोबाइल इंपोर्ट कर रहे हो तो उसके ऊपर 100%, 200% ड्यूटी। इससे आप रेडीमेड मोबाइल का इंपोर्ट कंट्रोल करोगे एंड अपनी कंट्री के अंदर असेंबलिंग इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए कंपोनेंट्स एंड रॉ मटेरियल्स को इजीली आने दोगे। तो ये असेंबल इन इंडिया को अचीव करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी चीज है कि हम हमारे इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को ठीक करें। इसके बारे में आप और जानकारी ले सकते हैं हमारे ही डॉक्यूमेंट को पढ़ के, जो कि www.aspireias.com वेबसाइट पे अवेलेबल है। वहां पे आप जाइएगा, फोकस इंटरव्यू 2020 प्रोग्राम पे क्लिक करिएगा एंड आपको वहां पे आपके सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। देन नंबर 3 पर आता है ट्रेड रिलेटेड लॉजिस्टिक्स। ट्रेड रिलेटेड लॉजिस्टिक्स अगर हम बात करें, लॉजिस्टिक्स इंडिया के अंदर इज अ मेजर
कॉस्ट एडिंग कंपोनेंट, क्या हो रहा है कि पूरे वर्ल्ड में लॉजिस्टिक्स कॉस्ट इज ओनली 10% ऑफ द जीडीपी, बट इन इंडिया इट इज अराउंड 15 to 20% of the GDP, which is very high. It gives us less cost competitiveness. It makes our exports expensive. एंड हमारी कोई डिमांड जनरेट नहीं होती वर्ल्ड के अंदर, इसलिए इंडिया के अंदर अब हम बात कर रहे हैं नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी के बारे में, भारतमाला, सागरमाला, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स एंड वाटरवेज, इनलैंड वाटरवेज जैसे कॉन्सेप्ट्स के बारे में, ताकि हम हमारे लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कम कर सके। तो लॉजिस्टिक्स एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट फोकस एरिया है, इसको इंप्रूव करना हमारे लिए एक बहुत बड़ी नेसेसिटी है। देन वी कैन टॉक अबाउट द ट्रेड एग्रीमेंट्स. Now there are in the economic survey they've given us a list of the trade agreements that we've already executed and the ongoing trade negotiations. We could not include the whole list, but we will upload it on the document that we will upload on the website. Here you can refer to the ongoing negotiations with Europe, with Sri Lanka, Thailand, Israel, Singapore. Now these differences, BTIA क्या होता है, FTA क्या होता है, सीका क्या होता है, सीपा क्या होता है, मैं आपको ब्रॉडली बताता हूँ। ये सारी चीजें हमारे ट्रेड की बास्केट के बारे में बात करती हैं कि कितना हम दूसरी कंट्री के साथ अपना ट्रेड का पार्टनरशिप कर रहे हैं, कितना हम अपने आप को उसके साथ ओपन करना चाहते हैं, उसी के ये लेवल्स हैं। इसके बारे में हम डिटेल में दूसरे वीडियो में चर्चा कर सकते हैं, बट हमारे डॉक्यूमेंट से भी आप पढ़ने की कोशिश कर सकते हैं एंड बाकी इसके अंदर आपको जो डिटेल्स हैं वो हम दूसरे वीडियो में शेयर कर लेंगे। देन कैपिटल अकाउंट. कैपिटल अकाउंट क्या होता है? एनीथिंग दैट इज मोर देन 1 year, दैट इज कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट के अंदर हमारे जो मेजर कंपोनेंट्स आते हैं वो आते हैं सबसे पहले एफडीआई, सेकंड इज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, थर्ड इज योर एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, देन शॉर्ट टर्म क्रेडिट एंड ऑल्सो द नॉन रेजिडेंट डिपॉजिट्स। जो एनआरआई हमारे इंडिया के अंदर बैंक अकाउंट्स के अंदर कुछ सेविंग करते हैं उसे नॉन रेजिडेंट डिपॉजिट बोला जाता है। तो ये हमारे कैपिटल अकाउंट के अंदर आते हैं एंड कैपिटल अकाउंट हमारा सरप्लस में चल रहा है। तो इसी से हम हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट को क्या कर सकते हैं? पूरा कर सकते हैं, उसको हम कम कर सकते हैं। हमारा कैपिटल अकाउंट सरप्लस हमारे फॉरेक्स के अंदर कंट्रीब्यूट करता है। अब सबसे पहले बात करते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होती है कि अगर कोई बाहर की कंपनी इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करना चाहती है, अपना नया कंपनी खोलना चाहती है, यहाँ पे अपने गुड्स बेचना चाहती है, अपने गुड्स बनाना चाहती है, या फिर किसी के साथ पार्टनरशिप के अंदर अपना बिजनेस यहाँ पे चलाना चाहती है, उसको हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। दिस इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी। किस में होता है? इक्विटी में होता है। तो एफडीआई जो है हमारी डबल हो गई है, doubling of the net FDI into the country from 2009 to 14 to 2014-19. So आप देख सकते हैं कि पिछले 5 साल के अंदर हमारी FDI, net FDI डबल हो चुकी है। This shows the success of Make in India. Plus, we've also reformed our FDI policy. हमने इसे बहुत ज्यादा लिबरलाइज किया है। बहुत सारे सेक्टर्स के लिए हमने 100% अलाउ कर दिया ऑटोमेटिक रूट से। FIPB को हमने हटा दिया। हमने नए सेक्टर्स खोले, सिंगल ब्रांड रिटेल ट्रेड को बहुत ज्यादा लिबरलाइज किया, लोकल प्रोक्योरमेंट नॉर्म्स को इजी किया, डिजिटल मीडिया को प्रमोट किया एंड हमने मल्टीपल इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर हमने लिमिट्स को इंक्रीज किया। सो आप देख सकते हैं हम एफडीआई को कितना ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं। इवन द एंजल टैक्स रिफॉर्म्स, उसके अंदर भी हम लोग स्टार्टअप फंडिंग को भी इंप्रूव कर रहे हैं, उसे लिबरलाइज कर रहे हैं। इससे हमारी एफडीआई इंक्रीज होती है एंड जैसा कि हम जानते हैं कि वर्चुअस साइकिल बनेगी। इससे अगर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी तो ऑटोमेटिकली ग्रोथ बढ़ेगा, ग्रोथ बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगा एंड ओवरऑल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंडिया का बेटर होगा। इसके बाद हम बात करते हैं ई-टेलर्स एंड इन्वेस्टमेंट इन दी ऑनलाइन कंपनीज। ये एक बहुत सनराइज सेक्टर है, इसके अंदर हम और ज्यादा इन्वेस्टमेंट जनरेट कर सकते हैं। हमारे पेटीएम हो गए, फ्लिपकार्ट हो गया, स्नैपडील हो गया, ओयो रूम्स हो गया, इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये बहुत ज्यादा फंडिंग अट्रैक्ट करती है बाहर से। तो ये एक नया अपॉर्चुनिटी है इंडिया को अपनी एफडीआई इंक्रीज करने का। नाउ व्हाट आर द टॉप सोर्सेज ऑफ इन्वेस्टमेंट इन आवर कंट्री? एफडीआई का क्या टॉप सोर्स है? सिंगापुर, मॉरिशस एंड यूएसए। अब आप पूछेंगे कि सिंगापुर, मॉरिशस, ये पिछले 3, 4, 5 साल से हमारे यहाँ पे कांस्टेंट है। व्हाई? ओनली बिकॉज दीज कंट्रीज आर टैक्स हेवन्स, दे हैव वेरी लो income tax and corporate tax in their own country. That is why companies first set up their head office in these countries and then they start to invest in our country.
इसके लिए फिर इंडिया ने टू अलाउ दिस मतलब टैक्स प्लानिंग और ये जो टैक्स एवेजन हो रही थी इससे बचने के लिए इंडिया ने अपने डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट्स को भी रिवाइज किया. देन व्हाट आर द टॉप सेक्टर्स? फर्स्ट इज टेलीकॉम, सेकंड इज सर्विसेज एंड थर्ड इज कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर. तो आप देख सकते हैं कि हमारा सर्विसेज सेक्टर इज एक्चुअली हेल्पिंग अस जनरेट अ लॉट ऑफ एफडीआई. इसलिए इंडिया ने 2018 में चैंपियन सर्विसेज सेक्टर का कॉन्सेप्ट शुरू किया जिसमें 12 सेक्टर्स के ऊपर बहुत थ्रस्ट दे रहे हैं, हम बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं इन ऑर्डर टू जनरेट मोर इन्वेस्टमेंट एंड इन ऑर्डर टू जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट इन दीज सेक्टर्स. देन फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं. इट इज इन द फॉर्म ऑफ डेट और इक्विटी. अगर आप लेस देन 10% किसी भी कंपनी में शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं तो उसे हम फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहते हैं. देन फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट अगर आप देखेंगे तो 2002 से लेके 2012 तक आवर इक्विटी फ्लोज वर मोर देन द डेट फ्लोज. तो हमारा जो इक्विटी होता था यानी जो शेयर्स में इन्वेस्टमेंट होती थी वो हमेशा ज्यादा होती थी देन द डेट पार्ट. लेकिन 2014-15 से लेके 2019 तक ये ट्रेंड रिवर्स हो गया. अब हमारे शेयर्स में तो कम इन्वेस्टमेंट होती है बट डेट के अंदर यानी कि ट्रेजरी बिल्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड सारे डेट इंस्ट्रूमेंट्स में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट होने लगी है. कहीं ना कहीं ये अच्छा भी है, इससे हमारा जो डेट मार्केट है वो ज्यादा डीपन होता है, हम लॉन्ग टर्म फंडिंग जनरेट कर पाते हैं, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में हम ज्यादा इन्वेस्ट कर पाते हैं, एसेट लायबिलिटी मिसमैच जैसी प्रॉब्लम्स कम होती हैं. But on the other hand, it is bad because it increases our external debt to GDP ratio. तो इससे अभी हॉट मनी प्रॉब्लम जनरेट हो सकती है. हॉट मनी प्रॉब्लम क्या होती है कि इफ वी हैव टू मच ऑफ एफपीआई इन आवर स्टॉक मार्केट, अगर बहुत ज्यादा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड है और अगर अचानक से इस पूरे एफपीआई ने अपना पैसा पुल आउट कर लिया, खींच लिया, सो दिस कैन क्रिपल आवर इकोनॉमी. हमारे पूरा स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाएगा, हमारे इन्वेस्टर्स को लॉस हो जाएगा, डोमेस्टिक कंपनीज डूब जाएंगी. इसलिए हम इसे हॉट मनी बोलते हैं कि इसके ऊपर हम ज्यादा रिलायंस प्लेस नहीं कर सकते. अ लॉट ऑफ एफपीआई, लेस ऑफ एफडीआई इज बैड फॉर द इकोनॉमी. Then increase in FPI limit in the G-Secs. अब हम recent amendments लेकर आए हैं इसको और ज्यादा प्रमोट करने के लिए. हम participatory notes जो होते हैं उसे discourage कर रहे हैं because participatory notes lead to the problem of money laundering and black money. Then allowing entities located in the non-BIS member nations. इनके बारे में हम डिटेल में अपने उसके अंदर लिखेंगे डॉक्यूमेंट में, आप वहां से इसको जरूर पढ़ें. Then external commercial borrowings. External commercial borrowings होती हैं कि जो हम बाहर से borrow करते हैं, whatever we are borrowing from the outside markets. Now only the private sector is in a condition to borrow from outside market. The government cannot do that. So what are the reasons that ECB is rising? अगर आप देखें तो यहाँ पे almost 2 times increase हो गया है. ये सिर्फ हाफ ईयर की फिगर है, तो आप देख सकते हैं कि हाफ ईयर में ही हमने इतना लेवल रीच कर लिया. तो बाय द एंड ऑफ द ईयर प्रॉब्ली वी विल इंक्रीज टू ट्वाइस द लेवल. इसके रीजंस है कि बाहर जो ग्लोबल रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बहुत कम है. जापान जैसी कंट्रीज में नेगेटिव इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन मिल सकता है, तो ये एक मेजर रीजन है. सेकंड इज हायर लिक्विडिटी. थर्ड इज कि हमारी खुद की सेविंग्स, हमारी इंडियन सेविंग्स बहुत कम है, इसलिए हमें बाहर से लाना पड़ता है. इवन अगर आपने एमएसपी का इशू पढ़ा हो तो आपने पढ़ा होगा क्राउडिंग आउट ऑफ द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट. सो गवर्नमेंट इतना ज्यादा डेट ले लेती है बैंक से कि अब प्राइवेट वालों के लिए कैपिटल बचता ही नहीं कुछ बोरो करने के लिए, इसलिए उन्हें बाहर से लाना पड़ता है. एंड फोर्थ इज दैट वी हैव लिबरलाइज्ड द ईसीबीज बिकॉज वी वांट द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट टू बोरो फ्रॉम आउटसाइड कंट्रीज. सो दीज आर सम ऑफ द रीजंस एंड ये ईसीबीज का कॉन्सेप्ट है. Then external debt. External debt हमारे इंडिया में 20% पर है, which is lower among the developing nations. ये अच्छी चीज है. एक्सटर्नल डेट कम होना चाहिए. एक्सटर्नल डेट उतना ही होना चाहिए जितना एक इकोनॉमी मैनेज कर सके, अपने करंट अकाउंट डेफिसिट को बिना हिलाए डेट सर्विसिंग कॉस्ट को आसानी से मीट कर सके. Then what are the probable questions from this particular chapter? Is current account deficit good or bad for the country? इनके ऊपर आप पहले खुद विचार करिए, खुद सोचिए, and then you can listen to our answer. Is current account deficit good or bad? Yes, it is good if it is in a reasonable limit. अगर reasonable है तो good है, अगर reasonable से ज़्यादा है तो good नहीं है. Is India is facing twin deficits. How does the fiscal deficit lead to current account deficit? Fiscal deficit कैसे current account deficit में lead कर सकता है? आप बोलेंगे कि सर इससे fiscal deficit से crowding out of the private investment होगा, external commercial borrowings बढ़ेगा जिसके ऊपर हमें interest pay करना पड़ेगा, इसलिए हमारा current account deficit बढ़ सकता है. Even जब हम fiscal deficit बढ़ाएंगे तो automatically inflation बढ़ सकती है. Inflation के बढ़ने से हमारे exports uncompetitive हो जाएंगे, इसलिए हमारा current account deficit बढ़ सकता है. You can also think why CAD leads to
फिस्कल डेफिसिट, ये भी आप सोच सकते हैं। शायद आपसे ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाएं आपकी इकोनॉमिक्स को टेस्ट करने के लिए कि कितनी स्ट्रांग है। Is Make in India really working? Are we actually seeing the results on ground? Yes, it is working, but only to a certain extent. एफडीआई आ रही है लेकिन उतने लेवल पे नहीं आ रही है, उन सेक्टर्स में नहीं आ रही जिनके अंदर उसे आना चाहिए। हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अभी भी एफडीआई कम आ रही है। सो दीज आर सम ऑफ द लूप होल्स इन दी मेक इन इंडिया पॉलिसी। अभी भी हमारे जो मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर्स है लाइक एसईजीज है, एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन्स है, प्रोसेसिंग जोन्स है, वो अभी भी खाली पड़े हैं। नेशनल इन्वेस्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग जोन्स अभी भी खाली पड़े हैं, कंपनीज नहीं आ रही है क्योंकि ब्यूरोक्रेटिक रेड टेपिज्म है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्लियर नहीं है, बहुत ज्यादा डिले हो जाता है, टाइम एंड कॉस्ट डिले हो जाता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जिसके कारण हम उतना रिजल्ट नहीं अचीव कर पाए जितना करना चाहिए था। डू यू थिंक दैट वी आर मूविंग टुवर्ड्स 1991 टाइप ऑफ बीओपी क्राइसिस? एब्सोल्युटली नॉट। FPI contribution to economy, so it helps generate the stock market. Stock market को बढ़ाता है, आगे बढ़ाता है. Even it helps in generating investment liquidity in the economy, which helps in further investment. Then is it okay to have high trade deficit if China also increases its investment into India? तो आप बोलोगे कि सर देयर आर टू पैरेलल थिंग्स, इन्वेस्टमेंट अपनी जगह पे आती है, ट्रेड डेफिसिट अपनी जगह पर होता है। यस, टू अ सर्टेन एक्सटेंट वी कैन ऑफसेट बोथ ऑफ देम, बट इन द लॉन्ग रन अगर हमें सस्टेनेबिलिटी लेकर आनी है तो हमें अपने ट्रेड डेफिसिट को कम करना पड़ेगा एंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट को भी रेगुलेट करना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा, हम एक न्यू इंपीरियलिज्म की स्ट्रैटेजी में आ जाएंगे, डेट डिप्लोमेसी में आ जाएंगे, जो कि इंडिया नहीं चाहता। सो आप बोलोगे कि सर दोनों चीजों को पैरेलली देखने की जरूरत है। आर प्राइम मिनिस्टर्स विजिट्स अब्रॉड एक्चुअली yielding any result in the economic terms? Yes, they are resulting. There is a lot of confidence among the foreign investors that they can invest in India, but as we mentioned that there are some bureaucratic hurdles before we can achieve the desired results. इमेज अच्छी हो चुकी है लेकिन ऑन ग्राउंड रिजल्ट्स अभी नहीं आना शुरू हुए। Then what are the changes made to the foreign trade policy in the wake of Make in India? तो आप इसके अंदर बोलोगे कि जो भी हमने अपने डॉक्यूमेंट में मेंशन किया है वो पॉलिसीज के बारे में आप बता सकते हैं। Which are the thrust areas that India should promote for Make in India? First is defense. Second is your network products. Third is electronic items and various agriculture food processing products. इस तरीके से आप आंसर दे सकते हैं इस क्वेश्चन का। Then coming out to the next chapter, that is monetary management and financial intermediation. ये chapter purely and purely economics, commerce and statistics से related जो लोग हैं उनके लिए relate करता है। For general study students, it has having very less implications. But yes, as part of your syllabus also, paper number 2 के अंदर जो आता है हमसे पूछा जाता है what are the RBI reforms, banking reforms. Paper number 3 में भी पूछा जाता है what are the SEBI reforms, insurance reforms in the country. तो आपको इसके लिए पता होना चाहिए। We can talk about the monetary policy, the banking sector, NBFC sector, money markets, capital markets, that is your stock markets. Then insurance sector and the insolvency bankruptcy code. ये मेजर इश्यूज हम हाईलाइट करेंगे। हमने यहाँ पे आपके लिए कुछ रीसेंट रिफॉर्म्स पिछले 1 साल में 1.5 साल में जो भी रिफॉर्म्स आए हैं उनके बारे में बताया है। फर्स्ट वी कैन टॉक अबाउट द रिडक्शन इन द रेपो रेट। आप जानते होंगे फ्रॉम February 2019 टू नाउ देयर हैज बीन अ डिक्लाइन ऑफ 110 बेसिस पॉइंट्स। देन एनहांसिंग लिक्विडिटी थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशंस। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ओपन मार्केट ऑपरेशंस पता होगा। देन वी इंट्रोड्यूस $5 billion ऑफ डॉलर रुपी बाय एंड सेल स्वैप। देन स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो को हमने रिड्यूस कर दिया बाय 0.25% एवरी क्वार्टर, तो हम उसको रिड्यूस कर रहे हैं। देन सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज द मनी मार्केट रिफॉर्म्स। मनी मार्केट क्या होता है? जहां पे गवर्नमेंट के बॉन्ड्स, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ये सारी चीजें डील होती हैं। ये शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं एंड इनके अंदर बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू की इन्वेस्टमेंट होती है। इनके अंदर ज्यादातर सिर्फ बैंक्स या फिर एनबीएफसीज या फिर गवर्नमेंट या फिर आरबीआई इस तरीके के जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं वो इन्वेस्ट करते हैं, ना कि छोटे छोटे हम जैसे लोग उसके अंदर इन्वेस्ट नहीं कर सकते। So अभी recently the government came out with Operation Twist, in which it sold the short-term securities and bought long-term securities. It was a way to adjust the yield, interest rate को adjust करने का था। Then second is कि transfer of surplus from RBI to government। आपको पता होगा बिमल जालान कमेटी के बाद 1.76 लाख करोड़ रुपीस ट्रांसफर किया गया।
accommodative stance taken by RBI. तो मॉनेटरी पॉलिसी में पहले हम न्यूट्रल पे थे, अब हमने बोला accommodative कि हम लिक्विडिटी को इंक्रीज करने को रेडी है अगर फ्यूचर में जरूरत पड़े तो. देन वी आर टॉकिंग अबाउट द भारत बॉन्ड ETF. अभी रिसेंटली आया था भारत बॉन्ड, जिसके अंदर हम 12 to 13 कंपनीज के पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के बॉन्ड्स को सेल करेंगे. देन एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट, विच इज टॉकिंग अबाउट मॉनेटरी ट्रांसमिशन, हम उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं. अभी तक हम MCLR रेट पर थे, लेकिन अब हम एक्सटर्नल बेंचमार्क्स के ऊपर जा सकते हैं, जिससे मॉनेटरी ट्रांसमिशन और ज्यादा जल्दी होगा एंड लिक्विडिटी बढ़ेगी. Then we can talk about the banking sector reforms in the last 1 year. You can read through these. If you have any doubts, you can write in the comment section. We can make a separate video for the banking reforms so that you understand better. Then NBFC sector reforms. NBFC, जैसा कि हमने पहले भी बताया था, it's very important for our socio-economic development. So NBFC की अच्छी हेल्थ होना हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. Then SEBI के रिफॉर्म्स क्या क्या है, तो SEBI के रिफॉर्म्स में सबसे पहले FPI कंडीशंस को हमने रिलैक्स किया, स्टार्टअप फाइनेंसिंग रिलेटेड रिफॉर्म्स लेकर आए, जिसके अंदर हमने वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग्स एज वेल एज प्राइवेट इक्विटी को बहुत ज्यादा लिबरलाइज किया. अभी लास्ट ईयर न्यूज आई थी कि दैट वेंचर कैपिटल फंडिंग एंड प्राइवेट इक्विटी इज हाईएस्ट इन इंडिया. आज तक की हिस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा हाईएस्ट वेंचर कैपिटल फंडिंग आई है इंडिया के अंदर. सो दिस इज अ वेरी प्रॉमिसिंग सेक्टर फॉर आवर स्टार्टअप इंडस्ट्री. देन लास्ट बजट में वी टॉक्ड अबाउट सोशल स्टॉक एक्सचेंज, 35% मैंडेटरी पब्लिक लिस्टिंग, रेगुलेटरी सैंडबॉक्स अप्रोच. रेगुलेटरी सैंडबॉक्स अप्रोच क्या होती है कि बहुत सारे रेगुलेटर्स हैं हमारे, मल्टीपल रेगुलेटर्स है, सेबी है, आरबीआई है, ये सारे रेगुलेटर्स, लेकिन जो नई एंटरप्राइजेस आ रही है जैसे फिनटेक है. अब फिनटेक एक ऐसी एंटरप्राइज है जो मल्टीपल सेक्टर्स को डील करती है, लेकिन उसके लिए कोई डेडिकेटेड रेगुलेटर नहीं है. तो ऐसी एंटरप्राइजेस को डील करने के लिए हम रेगुलेटरी सैंडबॉक्स अप्रोच पे जाते हैं, जहां पे रेगुलेटर्स एक आपस में कन्वर्ज करते हैं, आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं, ताकि इन कंपनीज को हम और ज्यादा प्रमोट कर सकें. So it is also a way to liberalize the economy. They need to reform the AIF, that is Alternative Investment Fund regulations. फिर IRDA के रिफॉर्म्स हैं, PFRDA के रिफॉर्म्स हैं, for the national pension system reforms as well as the new pension schemes that are coming in the market. तो इनके बारे में आप जरूर पढ़िएगा. इसके ऊपर आप अगर कॉमर्स से रिलेट करते हैं या इकोनॉमिक्स से रिलेट करते हैं तो जरूर क्वेश्चन आ सकता है. देन इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी से रिलेटेड रिफॉर्म्स. आप देख सकते हैं कि हमारे जो IBC है, तो पहले तो लेस देन 20% रिकवरी होती थी. अगर हम लोक अदालत में जाते थे या DRTs में जाते थे तो लेस देन 20% रिकवरी होती थी. लेकिन IBC के आने के बाद ये रिकवरी का परसेंटेज बढ़ के मोर देन 40%, 42% हो चुका है, विच इज अ वेरी पॉजिटिव थिंग. इससे हमारी बैंक्स के पास ज्यादा पैसा आ जाता है, उनका हेयर कट कम हो जाता है. देन प्रोसीडिंग्स अंडर द कोर्ट टेक ऑन एन एवरेज 340 days. तो आपको पता होगा अभी रिसेंट टाइम्स में देयर इज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम दैट इज रिजल्टिंग विद रिस्पेक्ट टू द कि कितना ड्यूरेशन है, मतलब कितना टाइम लगता है इंसॉल्वेंसी रिजॉल्व करने के अंदर. तो पहले ये ज्यादा टाइम लगता था, बट थ्रू द रीसेंट अमेंडमेंट्स द गवर्नमेंट हैज मैंडेटेड कि आपको 340 डेज के अंदर, 330 डेज के अंदर इसको खत्म करना होगा. सो एक वो चीज आई है, एक डिसिप्लिन आया है हमारे इंसॉल्वेंसी के अंदर. देन कुछ नए रिफॉर्म्स आए, जैसे कि प्रमोटर्स अपनी कंपनी वापस नहीं खरीद सकते. सेक्शन 12A विच सेज कि क्रेडिटर्स जो है वो विड्रॉ कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन, ये जरूरी नहीं कि इंसॉल्वेंसी के अंदर जाना ही पड़ेगा. देन थर्ड अमेंडमेंट, जैसा कि मैंने बताया, डिसिप्लिन को लाने के लिए थी, टू गिव टाइम, स्पेसिफाइड टाइम फॉर रिजॉल्विंग द डिस्प्यूट्स. इस सेक्शन से आपको मेजर क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, दैट मेजर चैलेंजेस इन द बैंकिंग सेक्टर, रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस एंड द इंपैक्ट ऑफ द सेम. देन NBFC सेक्टर के क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या रिफॉर्म्स हैं, इन क्वेश्चंस को हम डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं एक सेपरेट वीडियो के अंदर, क्योंकि उसके अंदर हम आपको बैकग्राउंड भी दे सकते हैं रिगार्डिंग व्हाट इज द बैंकिंग सेक्टर, व्हाट इज NBFC सेक्टर एंड व्हाट आर द मेजर इश्यूज. बट इन क्वेश्चंस को आप जरूर प्रिपेयर कीजिए. Then why are the stock markets so high? How can we control? तो markets are so high because of FPI and उनकी इन्वेस्टमेंट जो हमारे पास आ रही है. How can we control the speculation? तो स्पेकुलेशन को कंट्रोल करने के लिए देयर इज अ नीड फॉर बेटर ट्रांसपेरेंसी. देयर इज अ नीड कि हम ग्रेडेड सर्वेलेंस मेजर जैसे मेजर्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, हम FPI को रेगुलेट कर सकते हैं, हम नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड किस कंपनी के अंदर, किस तरह की कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट हो रहा है उस चीज को रेगुलेट करें, एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी रिलेटेड रिफॉर्म्स लेकर आए, तो ऑफ कोर्स वी कैन मेक इट मोर सेफर. Then how can we enhance the savings in the economy and what are the benefits of savings?
तो अगर ये जो पूरा सेक्शन है हमारा बैंक मॉनेटरी मैनेजमेंट से रिलेटेड, ये हमारा सेक्शन सेविंग्स को जनरेट करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आज हम बात करें तो हमारी सेविंग्स 2008 के बाद स्टैग्नेट हो चुकी हैं, एक ही लेवल की रह चुकी है, एंड वी आर नॉट इन अ कंडीशन टू इंक्रीज इट। इफ यू वांट टू इंक्रीज इट, वी हैव टू इंट्रोड्यूस रिफॉर्म्स इन द किसान विकास पत्रास, इंदिरा गांधी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, पब्लिक पेंशन फंड, इनको और ज्यादा इजी बनाना चाहिए, पोस्ट ऑफिसेस को और ज्यादा कस्टमर फ्रेंडली बनाना चाहिए, इन्वेस्टर फ्रेंडली बनाना चाहिए। तो इससे हमारी सेविंग्स बढ़ेंगी एंड हम इकोनॉमी के अंदर सेविंग्स जनरेट करके बेटर इन्वेस्टमेंट जनरेट कर सकते हैं। एंड बेनिफिट्स ऑफ सेविंग्स आर मल्टीपल। आप के खुद के घर में अगर आप देखेंगे तो पर्सनल लेवल के लिए भी आपके लिए सेविंग्स इंपॉर्टेंट है, अगर आप नेशनल लेवल पे देखेंगे तो भी सेविंग्स इंपॉर्टेंट है, तो बेनिफिट्स खूब है। देन व्हाई इज इंश्योरेंस पेनिट्रेशन एंड डेंसिटी लो इन इंडिया? तो इंश्योरेंस कभी भी हमारे इंडिया के अंदर एक फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है, हम इसे एक एक्सपेंस की तरह देखते हैं। क्यों? क्योंकि हमेशा से हम एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं, तो हमारा इंश्योरेंस इनफॉर्मली हो जाता है। एक कम्युनिटी के अंदर रहते हैं तो वो कम्युनिटी हमारा इंश्योरेंस करती है, हमने कभी भी फॉर्मल इंश्योरेंस को नहीं अपनाया। वही चीज आज भी हमारे सोशल नॉर्म्स कहीं ना कहीं हमें रिस्ट्रिक्ट करते हैं इंश्योरेंस को लेने से। देन प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस फॉर द आईबीसी, इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं, हम अपने डॉक्यूमेंट में इसे अपलोड करेंगे, एंड वेरियस बेसिक्स अबाउट ऑल ऑफ दीज सेक्टर्स। मूविंग ऑन, नाउ वी कैन टॉक अबाउट प्राइसेस एंड इन्फ्लेशन। फूड इन्फ्लेशन के बारे में बात करेंगे, ऑयल एंड फ्यूल इन्फ्लेशन के बारे में, एसेंशियल कमोडिटीज, कॉबवेब फिनोमेना, शिफ्टिंग इन्फ्लेशन डायनामिक्स, ग्लोबल ट्रेंड ऑफ चेंजेस in the prices and measures of controlling inflation. So there is a need to understand that after 2014-15 and 15-16, the inflation has been coming down in the Indian economy. Even in 2015-16, you would remember that we adopted the concept of inflation targeting. कि हमने RBI को बोला कि boss, your work is to control the inflation in the economy. Growth को आप अपने back of the mind रखो, लेकिन first target is to control the inflation. So इससे कहीं ना कहीं हमारी economy को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ. We were able to control the inflation. So right now we are talking about 2015-16 to 1920. But somehow in 1920, because of climate change, ड्रॉट्स, फ्लड्स एंड वेरियस हैजार्ड्स, हमारी फूड इन्फ्लेशन वापस बढ़ना शुरू हो चुकी है। सो इसलिए ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वी आर इन अ कंडीशन ऑफ स्टैगफ्लेशन, एंड व्हाई आर वी इन दैट कंडीशन, हाउ कैन वी इंप्रूव, इस चैप्टर से हम जान सकते हैं। फर्स्ट वी कैन टॉक अबाउट द फूड इन्फ्लेशन। फूड इन्फ्लेशन अगर हम देखें तो हमारा ट्रेंड आपको दिखेगा कि हमेशा से डाउनवर्ड आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। 2015-16 onwards the food inflation was on a declining trend. 2019 it suddenly increased because of heavy losses and droughts and floods. And where are we experiencing maximum? In vegetables, in fruits and in pulses. यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं ये हमने CPI जो होता है हमारा कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन इंडेक्स, उसका एक एग्जर्प्ट दिया है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वेजिटेबल्स में सबसे ज्यादा इंक्रीज है, पल्सेस में बहुत ज्यादा इंक्रीज है, एंड इवन इन योर मीट एंड फिश में यहाँ पे बहुत ज्यादा इंक्रीज है। जबकि सीरियल्स के अंदर इतना इंक्रीज नहीं है, तो आपको यू कैन अंडरस्टैंड दैट वेयर आर वी एक्चुअली गेटिंग दैट काइंड ऑफ इन्फ्लेशन फ्रॉम। नाउ सेकंड थिंग इज दैट CPI urban. If you see this diagram, you will be able to understand that the urban areas, यहाँ तक we were having CPI, that is inflation in the rural areas was more than in the urban areas. But after 2018, somehow the inflation in the urban areas has become more than the rural areas. So this is a change in the trend which you must remember in the mind. And what are the major items on which we are spending a lot in the urban areas? Food का inflation बहुत ज़्यादा बढ़ गया, क्लोथिंग इन्फ्लेशन, फुटवेयर इन्फ्लेशन एज वेल एज हाउसिंग इन्फ्लेशन, ये अर्बन एरियाज में बहुत ज्यादा बढ़ गया। whereas in the rural areas we are having more inflation in tobacco items, intoxicants and miscellaneous category. Then we can see कि because inflation is rising, so it means that our wages are not rising in line with that. So what is happening? The real agricultural wages have actually declined steeply since July 2017, and this is the major reason why we are facing a private final consumption expenditure का slowdown. आज अगर लोगों के पास पैसा ही नहीं है खर्च करने के लिए, how are they in a condition to consume more? So this is the exact reason कि क्यों हमारी इकोनॉमी आज स्लो डाउन में जा रही है, क्यों हमारी कंजम्पशन, हमारी डिमांड स्लो डाउन में जा रही है, क्योंकि हमारे रियल वेजेस डिक्लाइन कर चुके हैं। अब बात आती है पल्सेस की इन्फ्लेशन की। The pulses inflation in India has been a result of the cobweb phenomena. What is cobweb phenomena?
1 year the farmers saw that pulses prices is very high, so all the farmers started to produce pulses. And what happened next year? They saw that because there was a lot of supply of pulses in the market, suddenly the prices dropped, and this caused a cobweb phenomena. The farmers could not gain anything, and the consumers were facing a high price inflation in the economy. So this is the exact reason why we have pulses inflation. अगर आप देखेंगे तो 2017 के बाद हमने पल्सेस का हमारा जो प्राइसेस था वो बहुत ज्यादा कम हुआ था, बट 2018 में अचानक से बढ़ गया क्योंकि कॉबवेब फिनोमेना हुआ, फार्मर्स ने पल्सेस बनाना कम कर दिया. देन फ्यूल एंड ऑयल एंड एसेंशियल कमोडिटीज इन्फ्लेशन. एसेंशियल कमोडिटीज का इन्फ्लेशन बढ़ रहा है. यहाँ पर आप ट्रेंड देख सकते हैं. तो 2019-20 में फूड एंड बेवरेजेस की इन्फ्लेशन सबसे ज्यादा बढ़ी है. द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इज मिसलेनियस आइटम्स, इस तरीके से, एंड हाउसिंग इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. तो ये हमारा ट्रेंड है मेजरली. देन हम बात करते हैं ड्रग प्राइसेस की. The drug prices in India are controlled right now because last year also we introduced price caps through the Drug Price Control Order 2013. We introduced price caps on your knee implants, cancer drugs and stents. So this has somehow led to control in the drug prices. Even Pradhan Mantri Bharatiya Jan Aushadhi Pariyojana, which is PM BJP Jan Aushadhi Kendras, वहां से हमारे ड्रग प्राइसेस कंट्रोल होते हैं. तो इससे लोगों का आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ वो कम होता है. तो ये मेजरली ट्रेंड है, आप इसे याद रखिएगा. देन इन्फ्लेशन ड्यू टू ट्रेड मार्जिन्स. अब इकोनॉमिक सर्वे ने बहुत अच्छा एक कंपैरिजन दिया. उन्होंने बताया दैट दिल्ली एंड मुंबई जैसे शहरों में आज भी इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, ओनली बिकॉज ऑफ द ट्रेड मार्जिन्स. जो इंटरमीडियरीज होते हैं, ब्रोकर्स होते हैं, वो अपना प्रॉफिट बीच में से लेते हैं. जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है, इस वजह से इन्फ्लेशन आता है. इंफ्रास्ट्रक्चर वीक है, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है कि कहाँ पे सस्ती सब्जी मिलेगी, कहाँ पे महंगी सब्जी मिलेगी, लोग बस ले लेते हैं. तो कहीं ना कहीं हमारे जो दिल्ली एंड मुंबई जैसे शहर हैं वहां पर इन्फ्लेशन का कारण इज नॉट बिकॉज लैक ऑफ सप्लाई बट बिकॉज ऑफ high transportation, weak infrastructure and high profit margins added by the intermediaries. तो इस चीज को हमें कंट्रोल करना चाहिए. Then shifting inflation dynamics. इन्फ्लेशन जब हाई होती है तब मॉनेटरी पॉलिसी को टाइटन किया जाता है, लिक्विडिटी को कम किया जाता है ताकि इन्फ्लेशन कंट्रोल हो सके. लेकिन आपने देखा होगा दैट रीसेंट इंटरव्यू बाय मिस्टर Shaktikant Das, who is our governor of RBI, he has said that we are still looking at the inflation, whether it is transient or whether it is permanent. So this policy, why are we in a condition to right now not take an action? Because we are saying कि food inflation transient है, temporary है. हम अभी भी liquidity को high रख सकते हैं अगर ये liquidity आगे जाकर हमारे लिए problem नहीं बनती तो ये inflation, shifting inflation dynamics की बात हुई. Then we come down to what are the measures to control the food inflation in the economy. तो आप इसके बारे में आप इसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म. विद इन द शॉर्ट टर्म यू कैन से कि हाउ वी कैन इंक्रीज द सप्लाई फ्रॉम द एग्जिस्टिंग स्टॉक एंड हाउ वी कैन मॉडरेट द प्राइसेस, एंड विद इन लॉन्ग टर्म हाउ टू इंक्रीज द सप्लाई एंड हाउ टू रिड्यूस द कॉस्ट. So these are some of the measures. They are very common, and this is also part of your paper number 3, and this is also important for your interview. ये एक general suggestions है जो हमें हमेशा mind में रखनी चाहिए. What are the probable questions? Inflation and various types of inflation in the economy. यहाँ पे inflation के various types हो जाएंगे कि CPI, WPI, and इसके अलावा जो inflation होती है कि hyperinflation क्या होती है, something that is happening in Venezuela, hyperinflation, galloping inflation, stagflation, ये सारी चीजों के बारे में आपसे पूछा जा सकता है. Then Urjit Patel Committee which talked about plus minus 2%, है ना, 4% के ऊपर. तो ये चीज. Then causes of food inflation, how to control it. तो फूड इन्फ्लेशन के कॉजेज बहुत जेनेरिक हैं, जैसे कि फूड की सप्लाई कम हो गई, फ्लड्स हो गए, ड्रॉट्स हो गए, इवन ड्यू टू सम अमाउंट ऑफ इंक्रीज इन डिमांड, और ड्यू टू जैसे ट्रेड मार्जिन की हमने बात करी, इस कारण से भी हो सकता है, कॉपर फिनोमेना के कारण हो सकता है. देयर आर सो मेनी कॉजेज. देन हाउ टू कंट्रोल इट, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मेजर्स. व्हाट इज इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क? वही 4% प्लस माइनस 2% nominal anchor. And is it working fine? Yes, it is working fine. We have achieved good results, but right now it is
somehow the food inflation is increasing. That is why we are going off the target. Then consequences of inflation on the economy. Is inflation good or bad? Inflation is always good to a certain extent because it propels liquidity and it propels growth. But inflation less than a certain extent is bad for growth because it restricts the growth. And inflation beyond a certain extent will deteriorate the wealth. That is why it is not good. So inflation within a certain nominal anchor is good. Why did we shift from CPI AL, that is agriculture labor, to CPI rural? In case of MGNREGA wages, यहाँ पे सिर्फ दो चीजें एक्स्ट्रा होती हैं, हेल्थ एंड एजुकेशन. CPI रूरल के अंदर हेल्थ एंड एजुकेशन का परसेंटेज ज्यादा होता था, इसलिए हमने इसके ऊपर शिफ्ट किया. आज अगर रूरल एरियाज में हम जाते हैं तो वहां पे लोगों का जो फैमिली बजट है उसमें हेल्थ एंड एजुकेशन का एक्सपेंडिचर बढ़ चुका है, फूड पे इतना नहीं है. इस वजह से हमने MGNREGA में भी इसको चेंज किया. How will you deal with high inflation in your district? And Phillips curve theory, and is it applicable to India? Phillips curve कहता था कि अगर यहाँ पर इन्फ्लेशन होता था एंड यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट की परसेंटेज होती थी. ये कहता था कि अगर there is too much inflation in the economy, then unemployment percentage will be low. But if there is very less inflation in the economy, then unemployment percentage will be high. तो ये कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी में अभी अप्लाई नहीं करता फिलिप्स कर्व की थियरी. इस वजह से ये आपसे पूछा जा सकता है अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, अदरवाइज लाइक्लीहुड बहुत कम है. सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर. मैं उम्मीद करता हूं कि आपको लेक्चर समझ में आया, आपको अच्छा लगा. If you liked it, please click the like button, share it maximum with your friends so that they can also take benefit from our free initiative for genuine candidates who are sitting in different parts of the country, are not in a condition to spend a lot on classes, on mock interviews, and they generally want to do something good in their life so that they become IAS officers or civil servants. So this is our initiative, and we will continue our series of economic survey volume 2, and we will bring the further chapters later on. We will also bring you the union budget analysis. Till that time, please take care. खुश रहिए, हंसते रहिए, अपना ख्याल रखिए, स्माइल जरूर करिए, क्योंकि स्माइल करने पे कोई टैक्स नहीं लगता. और आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप एक स्माइल अपनी जरूर प्रैक्टिस करें. इससे आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, पॉजिटिव एटीट्यूड मिलेगा. अपने खुद भी पढ़िए, दूसरों को भी पढ़ाइए, एंड नेवर shy away from learning new things, improving on yourself, and never shy away from sharing good things with other people. Thank you so much. Jai Hind. Take care.